Hello everyone, good evening and welcome to the Hindu editorial discussion. I know studies are difficult. It's difficult to watch through large sessions. It's difficult to work hard in reasoning, maths, English, GA, computers, GS and other subjects. And it is difficult to qualify examination. But my friends, difficult roads often lead to beautiful destinations. So work hard, work smart, get selected. If you keep watching Adda247, then these three things are going to happen for sure, especially the last one. So guys, आज का जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है, हमने तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल आर्टिकल्स उठाए हैं और उन पे हम लोग एक डिस्कशन करने वाले हैं. Let's take a look at the first one. So guys, here's the first article. First, I'm going to discuss this article with you and then you will be given two spotting error questions which you'll have to solve. Okay, let's begin. The centre's decision to put unruly air passengers on a no-fly list ranging from 3 months to a lifetime depending upon the gravity of the offence is stringent, strict but welcome. In the air. वैसे इन दी एयर को सुन करके हो सकता है आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो ही गया होगा. द नेम इन दी एयर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग रिगार्डिंग एयरलाइंस. आई सपोज all of you remember that Ravindra Gaikwad scene that happened a few time ago, right? Where that Ravindra Gaikwad person, you know, that guy, I suppose he's an MP of the Shiv Sena people and of that particular party of Shiv Sena party, and I think he misbehaved with a 60-year-old Air India employee. तो जो मेरे ख्याल से आपको रविंद्र गायकवाड का इंसिडेंट याद होगा जहां उन्होंने बदतमीजी करी थी एक 60 साल के एयर इंडिया पर्सनल के साथ, और मेरे ख्याल से शायद उसी को बैकग्राउंड में रखते हुए ये पर्टिकुलर आर्टिकल लिखा गया है. दिस आर्टिकल इज समथिंग दैट हैज गॉट द सेम बैकग्राउंड. नाउ the centre's decision to put unruly air passengers on a no-fly list ranging from 3 months to a lifetime depending upon the gravity of the offence is stringent, strict but welcome. Now, my dear friends, there's a rule of central government. In fact, I think this act is in the making. This beautiful act, in fact, this new act is especially for unruly passengers. Those passengers who misbehave during any particular airline journey or aeroplane journey, this is going to punish them severely. In fact, you know what? It actually imposes a no-fly ban on such unruly and misbehaving passengers, and the ban ranges from 3 months to a lifetime. भाई अब देखा जाए तो बार बार पैसेंजर्स की बदतमीजी से परेशान हो करके एयरलाइंस को यह बहुत ही बड़ा वरदान दे रही है केंद्रीय सरकार, और इस एक्ट के तहत जो भी बदतमीज एयरलाइन के पैसेंजर्स होंगे या फिर जो भी बदतमीज हवाई जहाज का यात्रा करने वाले पैसेंजर होंगे, उन पे उनकी बदतमीजी के हिसाब से 3 महीने से लेकर जिंदगी भर तक का नो फ्लाई बैन लग सकता है. यानी कि वो कभी भी नहीं उड़ान भर पाएंगे दोबारा 3 महीने से जिंदगी भर तक, अलग अलग उनकी बदतमीजी को देखते हुए. लाइक a few students get timed out, a few others get banned in our sessions. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी होने वाला है. Now, well, the list will be maintained by the Directorate General of Civil Aviation and be put in public domain. ये जो लिस्ट होगी जिनको बैन किया जाएगा, इसको मेंटेन करेगा डायरेक्टरेट जनरल जो डीजीसीए होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. और हाँ, और ये सार्वजनिक कर दी जाएगी. इस लिस्ट को ये सार्वजनिक हो रखी होगी, पब्लिक डोमेन में आएगी. सो दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ low fly or rather banned from flying passengers will be maintained by the DGCA, which is the Directorate General of Civil Aviation, and it's going to be put in public. So last time, in fact not last time, so the next time rather, the next time you think of misbehaving while an air flight, please remember that your misbehavior may not only be a reason for a flying ban, but you might also get insulted publicly. वैसे भी जिसके पास रिश्तेदार हो उसको पब्लिक इंसल्ट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होगा अब तक. तो नाउ अब आगे देखते हैं. वेल, एनीवे,
Now, the quantum of or quantity of punishment is to be decided by an internal committee of the airline in question based on evidence produced by both the airline and the passenger within 30 days, during which the passenger would not be allowed to fly. अब किसी भी पैसेंजर को कितनी पनिशमेंट देनी है? क्या उसको 3 महीने तक नहीं उड़ने देना है? क्या उसे जिंदगी भर नहीं उड़ने देना है? या फिर उस पे जबरदस्ती इल्जामात लगाए हैं एयरलाइन ने जबकि वो बेकसूर था? ये सब जो है एक इंटरनल कमेटी तय करेगी। ऑलराइट, और ये जो इंटरनल कमेटी होगी, ये जो पूरा फैसला होगा, इस इंटरनल कमेटी को 1 महीने के अंदर 30 दिन में वो फैसला देना होगा और 30 दिन तक जो पैसेंजर है वो उड़ान नहीं भर सकता, वो कोई भी फ्लाइट नहीं बुक कर पाएगा। नाउ लेट्स जस्ट say the quantity of punishment which has to be given to any particular passenger for misbehaving. That quantity of punishment is going to be considered by an internal committee, and this committee will be giving its decision based on the evidence produced by the passenger and the airline within 30 days. During this time of these 30 days, the passenger will not be allowed to fly. Okay, I hope guys कि इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। Now, let's just say no compensation. Okay, let's just see over here. No compensation will be offered to the passenger in case the allegations of the airline are proven wrong. Aggrieved passengers can appeal within 60 days to an appellate committee. अब देखा जाए तो किसी भी तरह का, अगर मान लेते हैं कि एयरलाइन ने जबरदस्ती किसी पैसेंजर को फंसाने की कोशिश करी, तो उसके लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा किसी भी पैसेंजर को। और हाँ, अगर मान लेते हैं जो एयरलाइन कमेटी का जो रिपोर्ट है, अगर वो पैसेंजर के खिलाफ जाता है और पैसेंजर उस रिपोर्ट से, उस कमेटी के रिपोर्ट से और उस सजा से अगर मान लेते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर वो 60 दिन के अंदर एक अपीलेट कमेटी के सामने अपील कर सकता है दोबारा डिसीजन देने के लिए। नाउ लेट्स जस्ट से if any particular airline frames a particular passenger, which is quite unlikely, and the thing is that there will be no compensation which shall be given to any passenger who gets framed by the airline, and let's just say a passenger feels that he has been wronged by this committee and he has been given wrong punishment, then he can appeal once again in front of an appellate committee within 60 days of the decision that he has received. मैं उम्मीद करता हूं गाइस कि इतना आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो आप लिख भी सकते हो, बैठ गया सर। ओके, अब आगे देखते हैं। Other airlines will not, however, be bound by one airline's no-fly ban. अब मान लेते हैं कि स्पाइस जेट एक एयरलाइन है। स्पाइस जेट ने अगर किसी पर्टिकुलर पैसेंजर पे नो फ्लाई का बैन लगा दिया कि 3 महीने तक ये हमारी स्पाइस जेट पे जो है कोई भी बुकिंग नहीं कर सकते हैं और इनको हम नहीं उड़ाएंगे, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो पैसेंजर जो है वो जेट एयरवेज की टिकट नहीं बुक कर सकता। Now, this is something that you guys must keep in mind. This is a very, very serious thing over here. Let's just say if Kingfisher Airlines places a no-fly ban on anyone, let's just say कि मान लेते हैं, मैं अपनी ही बात करूं, मैं खुद ही को बैन कर लेता हूं। मान लेता हूं कि अगर मुझ पे बैन लगा दिया, let's just say if I get banned by Kingfisher Airline, and they place a 3-month ban on me for flying with them, it doesn't mean that I cannot book a ticket on Jet Airways. All right, so no particular airline's ban can be imposed by another airline. Okay, तो किसी भी एक एयरलाइन द्वारा लगाया गया बैन दूसरे एयरलाइन के द्वारा इंपोज नहीं किया जा सकता है। Now, the no-fly list provisions look stringent, empowering airlines to impose strict penalties in case of alleged misbehavior or graver offenses by passengers. अब देखा जाए तो ये एक ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा किस्म का नियम है, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का यहाँ पर एक एटीट्यूड दिख रहा है इस पर्टिकुलर एक्ट से। और हाँ, कोई भी अगर पैसेंजर्स बदतमीजी करेंगे या फिर उससे ज्यादा अगर और भी कोई गहन गलतियां कोई पैसेंजर करेगा तो उसको उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा। नाउ if I talk about a bird's eye view, then definitely this particular act does look very stringent, and it looks as if that a lot of strict actions can be imposed on a particular passenger who gets unruly and misbehaves with a particular airline. अच्छा,
शैम्पी कह रही है नहीं सर आप बैन मत होइए. शैम्पी, that was just an example of air rage, and a lot of VIPs are there in our country, and a lot of them are useless as well. A lot of them entitlement is there in our country. So that is why, considering what kind of airline culture is there in our country, I think this particular ban is very important. What is your view, guys? Do you think such kind of ban should be there? What's your view? You can give your view in the comment section. अच्छा, अब देखो क्या है, आमतौर पर ऐसे बैन नहीं लगाए जाते हैं किसी भी देश में, लेकिन भाई भारत के कल्चर को देखते हुए, भारत में जो एयरलाइन का कल्चर है, जहां पर कुछ लोग जो है, इनफैक्ट कुछ लोग नहीं, कई सारी ऐसी घटनाएं आए हैं जहां पर जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने मिसबिहेव किया है एयरलाइन स्टाफ के साथ. साथ ही में इंडिया में देखा जाए तो हर किसी का चाचा या मामा या फूफा कोई ना कोई VIP निकल ही आता है, कईयों के तो अब बाई VIP होते हैं. ठीक है भाई, तो देखा जाए तो अब हमारा VIP कल्चर बहुत ज्यादा है हमारे कल्चर में, तो देखा जाए तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से इस तरह का बैन होना चाहिए. आपका क्या व्यू है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में. ओके, नाउ the new rules are specifically a response to the recent case of unruly and violent behavior by Shiv Sena MP Ravindra Gaikwad on board on an Air India plane 6 months ago. तो इनफैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, 6 महीने पहले शिवसेना के एक MP थे रविंद्र गायकवाड़, एंड उन्होंने जो है बहुत ही बदतमीजी करी थी. उन्होंने शायद मेरे ख्याल से हाथापाई भी करी थी एक एयर इंडिया के 60 साल के बुजुर्ग एम्प्लॉय के साथ, और उसी के बैकग्राउंड में ये यहाँ पर जो एक्ट है वो बन के आया है. अच्छा, सबसे फनी बात यह है कि हाथापाई करी शिवसेना के MP ने, और शिवसेना ये कह रहा है कि एयरलाइन वाले दादागिरी कर रहे हैं उनके साथ. अब इससे ज्यादा कॉमेडी वाली चीज और क्या हो सकती है. एनीवे, well, nothing. I just told you in the beginning itself that 6 months ago, Shiv Sena MP Gaikwad, Ravindra Gaikwad, misbehaved with a 60-year-old Air India employee. In fact, not only misbehaved, I think he also slapped and manhandled that 60-year-old employee. And because of that, you can see that was the background for this particular act over here. Okay, so guys, I hope that this much has got seated in your brain. For more of this particular article, you can use the free editorial PDF link, which shall be active after the show gets offline. Now, it's time for spotting error questions. Let's take a look at them. So guys, here are your spotting error questions. You gotta get, okay, I'm gonna give you 30 seconds. Time starts now. Start answering, guys. Hurry up. Okay, guys, 20 seconds left. Hurry up. Come on, guys, 10 seconds more. What's the answer here? Come on, guys. What's the answer here? All right. So, guys, the first question is, the list will be maintained by the Directorate General of Civil Aviation and being put in the public domain. Question number 2 is, in India, a widespread culture of entitlement, especially among VIPs, and growing incidents of air rage has been noticed. Well, let's take a look at the correct answers, and the answers are: for question number 1, the error lies in part 3. For question number 2, the error lies in part 4. Now, for question number 1, the error lies in be put in. That should be there. Well, the list will be maintained by the Directorate General of Civil Aviation and being put in the public domain. There is no use of making this statement in passive voice. कोई ज़रूरत नहीं है कि इस स्टेटमेंट को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, तो इसलिए वहां पर हम लोग being नहीं लगाएंगे. Be put in is absolutely fine over here, and that should be there in part 3. I think majority of you got it right. Well done, people. Coming down to question number 2. In India, a widespread culture of entitlement, especially among VIPs, and growing incidents of air rage. We are talking about multiple things. A widespread culture of entitlement, especially among VIPs, a culture of entitlement,
and growing incidence of air rage. So there's a culture of entitlement, there's a culture of in fact there's also, we can see there were growing incidence of air rage. Okay, तो plurality है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर has been की जगह have been noticed होना चाहिए. It should be have been noticed over here. I hope guys कि आप लोगों का score 2 on 2 जरूर पहुंच गया होगा. If it's not 2 on 2, even 1 on 2 is also a nice score. Okay, now let's move forward. Let's take a look at the next article, and here it comes. All right, so back to the future. Now guys, before I explain to you regarding this particular article, let me remind you a few things. If you have taken the examinations again and again and again, if the age limit, the upper limit of the age limit is really very close and you are concerned whether you'll be able to make the cut, if anyone has ever told you that you will not be able to achieve success because you are an average student or whatsoever, then you must watch this particular article for sure, because this article, ladies and gentlemen, is an article of inspiration, is an article that shows that hard work and smart work always wins the race. Now, let's take a look at this. Men's tennis appear to have been transported into the past year. No one saw Roger Federer and Rafael Nadal splitting the majors, but in 2017, this is precisely what they have done. Well, रॉजर फेडरर एंड राफेल नडाल टुगेदर, माहौल काफी गर्म होता जा रहा है, तो यहां पर जो है ठंडक की बहुत जोरदार आवश्यकता है. नाउ, men's tennis appears to have been transported into the past this year. Well, the thing is that, initially, when Roger Federer or when Rafael Nadal were there in their primes, what usually would have happened was, in fact, what usually happened was Australian Open, Wimbledon, US Open, French Open, most of the time won either by Roger Federer in a single year or by Rafael Nadal in a single year. But now what has happened? Now in this year, some of the things like the Wimbledon and the Australian Open have been won by Roger Federer, and then the US Open was won by Rafael Nadal. So my dear friends, what I want to tell you over here is that by achieving such things, अभी देखा जाए तो आमतौर पर जब राफेल नडाल अपने प्राइम में थे या रॉजर फेडरर अपने प्राइम में थे, तो होता क्या था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो या विंबलडन वाला हो, हर कोई मतलब जितने भी आपके अलग अलग कप्स होते थे या कह सकते हैं हम ग्रैंड स्लैम होते थे, वो या तो एक साल में रॉजर फेडरर सब जीतते थे या तो एक साल में आपका जो नडाल था वो एक साथ जीता था. लेकिन इस साल देखा जाए तो ऑपोजिट हुआ. क्यों? क्योंकि इस साल का जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था और जो विंबलडन था वो रॉजर फेडरर ने जीत लिया. ऑन द अदर हैंड जो यूएस ओपन था वो राफेल नडाल ने जीत लिया. तो आमतौर पर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ. नाउ फेडरर, Roger Federer, in winning the Australian Open and the Wimbledon in his 36th year, Federer showed that he is a rare great, one who marries a handsome, timeless style and a clinical, ruthless mind to transcend or surpass what is thought possible. Okay. Now, why has this been written over here? See, the thing is, now what happened over here is, now see, Roger Federer is actually a rare great, a great. Now, why is this being said over here is that, see, in Australian Open, he won the Australian Open and he also won the Wimbledon. He has won lots of Australian Opens and he has won lots of Wimbledon. But why is this year's winning of Roger Federer really very special? Well, the thing is, my dear friends, that in sports, especially in tennis, see, 35 is supposed to be the maximum age any player can play good tennis. Usually, the maximum age, it is around 30 to 35. If any player is between 30 to 35, he is rarely supposed to win any major tournament or win any major Grand Slam. But Roger Federer proved this concept wrong and turned this whole phenomenon upside down
because not only gentlemen did he win the Australian Open, he also won the Wimbledon in his 36th year of life. Now this is a really very rare feat to achieve. अब देखो क्या है, जहां तक बात होती है टेनिस की, 32 से 35 तक मैक्सिमम एज माना जाता है किसी भी टेनिस प्लेयर के लिए, कोई भी अब देखो मतलब कोई भी ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए। और इनफैक्ट लोग यही मानते हैं कि 32 से 35 के बीच में कोई बहुत ही बाता महान प्लेयर हो गया तो उसने एक दो वो इनफैक्ट जो है एक दो इनफैक्ट एक साल में तो एक ही जीत पाएगा, फाइनल हो सकता है पहुंच जाए 2-3 बार। लेकिन देखा जाए तो रॉजर फेडरर ने यह पूरा कंसेप्ट ही उल्टा कर दिया, क्योंकि 32 से 35 तक लोगों को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है, उनके जिंदगी के 36वें साल में यानी कि 36 साल की उम्र में भी इस साल ना तो उन्होंने केवल विंबलडन जीता बल्कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता और साथ ही में विंबलडन भी जीत के दिखाया। सो बोथ ऑफ द थिंग्स बोथ ऑफ द ग्रैंड स्लैम्स ही वन एंड ही क्लियरली शोड, उन्होंने साफ साफ दिखाया कि वो सच में एक बहुत ही अलग किस्म के महान प्लेयर हैं। नाउ Nadal has been stretching the limits of possibility himself, और सिर्फ रॉजर फेडरर ही नहीं, राफेल नडाल ने भी बहुत इंप्रूवमेंट किया है और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा बदल के दिखाया भी है। Now not only Roger Federer, even Rafael Nadal has also pushed himself to the limits of possibility. Now from the time he won his first ATP match at the 15-year-old in 2002, he has been told his frantic or furious or physical method would not last into his 20s. He was also told that his monotone or oneness game would end in little success outside the familiar comforts of clay. अब देखा जाए भाई तो जो राफेल नडाल थे, 15 साल की जब उनकी उम्र थी 2002 में, तो उस उम्र में उन्होंने अपना पहला ATP मैच जीता था। और देखा जाए तो ये बेसिकली ये आपका टेनिस का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ATP मैचेस फॉर मेन दिस इज यूज्ड। सो एनीवे उन्होंने अपना पहला मैच जो था ATP का 2002 में जो था एज अ 15-year-old, और उनको बोला गया था कि तुम जो है एकदम मतलब ऑफ द बुक मेथड के साथ तुम खेलते हो, तुम ऑर्थोडॉक्स मेथड के साथ नहीं खेलते हो और बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी तुम यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा एक झटके में कोर्ट के इस एंड से दूसरे एंड, उस एंड से इस एंड, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ तुम खेलते हो। इतनी एनर्जी के साथ तुम जब 20s में होंगे तो तुम नहीं खेल पाओगे। साथ ही में उनको ये भी बोला गया कि देखो भैया, तुम स्पेन से हो और तुम्हारा जो फील्ड है वो सिर्फ क्ले है, तुम क्ले के अलावा कहीं भी कुछ नहीं कर पाओगे, तुम क्ले के अलावा कहीं भी कुछ नहीं जीत पाओगे। नाउ not only Roger Federer, Rafael Nadal has also improved himself a lot and he also comes in the slot of greats. Why is that? Rafael Nadal won his first ATP match when he was just 15 years old in 2002, and there were two things that were told specifically to him. The first one was that his style of tennis, Rafael Nadal's style of tennis, he was a lefty, by the way, he's a lefty. And you know what? His style of tennis is something that's a really very crazy way. Why is it a crazy way? Because his style of tennis is a very unorthodox one. And people told him that you will not be able to use your physical strength every time, especially when you get into your 20s. And not only this, but also he was told that Rafael Nadal was also told that you are just a person, since you belong to Spain, the third US Open title, his 16th major overall. And you know what? The people who had told him all such things, they'll be feeling like fools because, he has also come of age, and recently, ladies and gentlemen, on Sunday, he won his third US Open title, which is played on hard court, and this was also his 16th major Grand Slam overall. Well, अब देखा जाए, और वो सभी लोग जो ये कह रहे थे कि जिन्होंने राफेल नडाल को ये बोला था कि तुम क्ले के अलावा कहीं और ज़्यादा कुछ बन नहीं पाओगे, कहीं और कुछ जीत नहीं पाओगे, या फिर तुम्हारा जो मेथड है वो 20 साल की उम्र में ही ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। वो सभी इस टाइम पे अपनी मूर्खता पे या तो रो रहे होंगे या तो हंस रहे होंगे, वही जानते हैं वो क्या कर रहे होंगे। लेकिन राफेल नडाल ने उनको मूर्ख साबित करने के लिए तो नहीं, अपने आप को महान दिखाने के लिए, और हाँ वो सच में है भी,
वो दिखाने के लिए ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये दिखाया कि उनके अंदर कितना टैलेंट है। एक बार फिर से उन्होंने दिखाया जब उन्होंने संडे को अपना तीसरा यूएस ओपन का खिताब जीत लिया, जो कि हार्ड कोर्ट पे खेला जाता था, क्ले पर नहीं। और साथ ही में ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही हल्की फुल्की चीज थी, ये उनका तीसरा यूएस ओपन टाइटल था और ओवरऑल में 16वां मेजर ग्रैंड स्लैम था जो उन्होंने जीत लिया था। नाउ द स्पेनियार्ड हैड डिबंक्ड or proved it wrong the theory that he was a one surface wonder in 2008 when he first triumphed at Flushing Meadows and he completed the career's Grand Slam. अब देखा जाए तो जहां तक ये रही बात कि क्ले के अलावा कहीं कुछ नहीं जीत पाओगे, so as far as the concept, as far as the phenomenon that outside clay you are nothing was concerned, then 2002 he won his first he won his first ATP match, and you know what, 7 years later in 2010, which was the 8th year by the way, he won his first Wimbledon championship. You know, so perhaps all those people who told him when he was 15 years old that you will not last any longer or last anywhere except on clay, they were proved wrong again in 2010 when Rafael Nadal won his first Wimbledon. And you know what? That was also his first career Grand Slam that year. He also got his career Grand Slam that year. तो वो सभी बुद्धू जो राफेल नडाल को ये बोले थे कि तुम क्ले के बाहर कुछ नहीं कर पाओगे, वो सभी बुद्धू पहली बार तो तब छुप गए होंगे जब उन्होंने 2010 में जो है इनफैक्ट 2010 में कह सकते हैं आप 7 साल के बाद उन्होंने एटीपी मैच अपना पहला जीता था 2002 में, तो उससे 7 साल बाद 2010 में उन्होंने अपना विंबलडन चैंपियनशिप भी जीता और साथ ही में अपने साल का पहला करियर ग्रैंड स्लैम उन्होंने पूरा कर लिया। नाउ but before this Sunday, the 31-year-old had not won a slam outside of Roland Garros since 2013. हाँ, लेकिन ये बात भी है कि 31 वर्षीय राफेल नडाल 2013 के रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम के बाहर कुछ और जीत नहीं पाए थे. He won a Grand Slam after a period of around 4 years. Now, this is also true that age is a factor, and see, since he is in his 30s, his early 30s, 31-year-old Rafael Nadal won this particular slam after 4 years after winning the Roland Garros in 2013, and it has been 4 years since he won the Grand Slam. Now, in ending that wait and closing the gap to Federer's record of 19 majors, Nadal bullet-proofed his legacy as an all-court champion and kept the race to number 20 alive. Now, till now, Roger Federer has won 19 major Grand Slams, and you know what? Rafael Nadal is the next one. He is at 16th, so he's at number 2, he's at 16th. And with this can be said that Nadal is perhaps the closest competitor to Roger Federer right now, and the form that he showed during this particular US Open championship or the US Open Grand Slam, it was very clear that if there will be anyone who can break Roger Federer's record, that it can be Rafael Nadal, because he is not a single quota. He has proved it again, time and again, that he can play comfortably on all types of courts. अब देखा जाए भाई, अभी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेजर जो है वो आपके रॉजर फेडरर के पास है. 19 मेजर जीते हैं रॉजर फेडरर ने, और राफेल नडाल नंबर 2 पे हैं, उन्होंने 16 मेजर जीते हैं. लेकिन यही कहा जाता है कि अभी तक अगर कोई रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ सकता है तो वो राफेल नडाल ही है और कोई नहीं है. सबसे नजदीक तो वही है, और साथ ही में उन्होंने बार बार ये साबित करके दिखाया भी है कि वो हर तरह के कोर्ट पे जीत सकते हैं, सिर्फ क्ले नहीं. नाउ well, Sunday night also marked the end of the most successful player-coach relationship in tennis. अब देखा जाए तो संडे रात्रि को जब राफेल नडाल जब उन्होंने अपना यूएस ओपन का फाइनल जीत लिया, तो उसी दिन एक बहुत ही अच्छा कोच प्लेयर का रिलेशनशिप जो था वो भी उस दिन को एंड हो गया. Now on the night of Sunday when Rafael Nadal won this US Open, a beautiful, in fact the most successful player-coach relationship also ended. So guys, what do you think? What's next for Roger Federer and Rafael Nadal? What do you think
Can Rafael Nadal ever equal or or overtake this record of Roger Federer? Can Roger Federer extend his record even more? What happens next in this article? If you want to read more, you can simply use the free editorial PDF, which we'll be loading very soon after the video ends. As of now, it's time for question number 3, and here it comes. So which of the following is true according to the passage? You got 3 statements. Time starts now. 30 seconds. Hurry up, people. Okay, guys, just 10 seconds more. What's the answer? Hurry up. Well, it's my turn to give you the answers, I guess. Okay. Now, which of the following is true according to the passage statement? A says, men's tennis appears to have been transported into the past this year. Statement B says, Nadal was also told that his monotone game would get little success outside the familiar comforts of grass. And statement C also says that the Spaniard had debunked the theory that he was a one-surface wonder in 2011 when he won his first Wimbledon final. So guys, here were your statements. Let's see the correct answer, and the correct answer is, well, it's only A. That means option number 1. Well, only A is true. Now, why is that? Because in statement B, that's wrong. Statement B is wrong. Why? Nadal was also told that his monotone game would get little success outside the familiar courts of grass. Likha hai. It's grass in statement B. That's why it's wrong. Statement C is wrong. Why? The Spaniard had debunked the theory that he was the one-surface wonder in 2011. Rather, he won his first Wimbledon final in 2010, not 11. So the correct answer is option number 1, only A. That's why I tell you guys, read the statements completely and carefully before giving the answer. I can see a lot of people like Sweetie Sonu, Anuj Vishnoi, and other people who have got 3 on 3. That's very good. And all those of you who have got 2 on 3 like Amardeep or Diksha or or Pooja, you are also doing a good job. Now guys, let's take a look at the next article of the day. So guys, here's the last article today. The track to success. What do you think, guys? Is this regarding the Indian Railways? Is this regarding the bullet train? What exactly is the track to success regarding? Let's see about this. Since they were commissioned more than 5 decades ago, bullet trains have been the symbol of Japan's engineering prowess or expertise. Dekha jaye to bhai, in fact, let me tell you in English first. Well, around 50 years ago, bullet trains arrived and started, the bullet trains got commissioned and started working in Japan. And since then, they have been a symbol of Japan's engineering marvel or engineering prowess. तकरीबन 50 साल पहले बुलेट ट्रेन्स को कमीशन किया गया था जापान में, और तब से ये जापान की सुपीरियर इंजीनियरिंग का एक्सपर्टीज का सिंबल बने हुए हैं. The ambitious project demonstrated Japan's significant engineering skill and expertise, and its success transformed the way that Japan was viewed by the rest of the world. देखा जाए तो ये जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जब ये प्रोजेक्ट असलियत में इसने जब आकार लिया, जब इसने वास्तविकता में आकार लिया, तो पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई. हर देश स्तब्ध रह गया कि जापान इंजीनियरिंग में कितना आगे है हम सब से, और वो भी ये उस देश की हम बात कर रहे हैं जिस पे दो बार एक नहीं 2 बार एटम बॉम्ब्स गिराए गए थे, और ये उस देश की इंजीनियरिंग थी जो इनफैक्ट जिसकी वजह से
वो वापस अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर पाया और उसने पूरी दुनिया को बुलेट ट्रेन का यह मार्वल या अजूबा सामने ला कर दिखाया। Now guys, 50 years ago, when Japan unveiled its bullet train, it actually surprised every country in the world, because first, we are talking about the country, the only country in the world which suffered due to atom bombs, and not one, but 2 atom bombs. And you know what? Still, it showed everyone that no matter how much destruction is there, if you have the will, you can always stand back on your feet, and that's simply the way in which Japan stood back on its feet. And not only that, you know, they simply showed their mettle and the expertise that they possess as far as engineering is concerned the moment they unveiled bullet trains. Similarly, China has focused on the development of its high-speed rail network as a symbol of its engineering capabilities. And the same way, you know, the same way that Japan has progressed in engineering, China has also focused and, you know, they have concentrated on the development of their high-speed rail network, and you know, they have also been a symbol of its, of this particular railway network of China has been a symbol of their engineering capabilities. Okay. अब देखा जाए भाई, जैसे कि जापान ने करके दिखाया बुलेट ट्रेन के हेल्प से कि कितने बड़े इंजीनियरिंग में 30 मार खाए हैं वो, वैसे ही भाई चाइना भी ज़्यादा पीछे नहीं है। चाइना ने भी अपना लोहा मनवाया है अपने हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को सामने लाकर और ये दिखाकर कि वो भी बहुत आगे है जहां तक बात है इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ की। Japanese Prime Minister Shinzo Abe will arrive in Gujarat later this week to lay the foundation stone for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, also known as the Ahmedabad-Mumbai bullet train. भाई देखा जाए तो इसी हफ्ते के आखिरी की तरफ जब ये वीकेंड होगा, इसी हफ्ते इनफैक्ट वीकेंड की तरफ देखा जाए इस हफ्ते के, तो जो जापान के माननीय प्रधानमंत्री है श्री शिंजो अबे जी, वो गुजरात में पधारेंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे का जो वहां पर शिलान्यास होगा मेरे ख्याल से उसको करेंगे। और ये जो रेल प्रोजेक्ट है इसको अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। Now, you know, later this week, or this particular week only, Japanese Prime Minister Mr. Shinzo Abe will arrive in Gujarat and he shall lay the foundation stone for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail project, which is also commonly known as the Ahmedabad-Mumbai bullet train. I hope guys कि इतना आपको समझ में आ गया होगा. This much you would have got for sure. Okay, now there is an expectation that similar to the experience for Japan and China, this project could be one of the catalysts in transforming India. अब जैसे कि बुलेट ट्रेन ने काफ़ी बदलाव लाके दिखाया जापान के अंदर, हाई स्पीड रेल नेटवर्क ने काफ़ी बदलाव लाया चाइना के अंदर, वैसे ही उम्मीद की जा रही है जब ये इंडिया में आएगा तो इस बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट को देखते हुए भारत में भी बहुत सारे यहाँ पर बदलाव आएंगे. Now, so the way in which this particular bullet train changed Japan, and the way in which the high-speed railway network changed China, this particular project, you know, this can be a catalyst in transforming India as well. India has already experienced success in major projects in the past, which includes building the Golden Quadrilateral and upgrading its national highways, which has added to the GDP, created efficiencies in transportation, provided jobs and improved rural development through enhanced connectivity. अब देखा जाए तो इंडिया में लोग स्केप्टिकल बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत जल्दी सब लोग हो जाते हैं स्केप्टिकल और सब लोग सोचते हैं अरे सर ये बुलेट ट्रेन है, सर ये इंडिया है, जापान में चल सकता है, इंडिया में नहीं चल सकता. जापान भाई वॉरन में लोग लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए कैमरा, इंडिया में तो लोग जो है जो चोर आते हैं वो कैमरा भी चुरा के ले चले जाते हैं अपने साथ. एनीवे, नाउ द प्रॉब्लम विद इंडियन पीपल इज दैट you guys, in fact all of us, let's just say people get skeptical very soon. Now I think a lot of you would agree that see, in Japan bullet train may work or other nice things may work in foreign but when it comes to India, many of the concepts stop working because let's just say security cameras are installed for security,
But in India, when thieves arrive for burglary, they take the cameras with themselves. Anyway, well, but you know what? In India, the Golden Quadrilateral worked wonders as far as the national highways were concerned, and they added substantially to the GDP. They created efficiencies in transportation, and they also got jobs in various rural development areas. And rural development also took place in, and they also improved as well because of the railways. Now, अब देखो क्या चीज़ है, अब भाई ऐसा नहीं है, भारत में भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होता है. फॉर एग्जांपल जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था, जो कि हाईवेज पे एम था, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उससे हमारा जीडीपी को भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचा. साथ ही में ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया पहले से, बहुत सारी नौकरियां भी बनी, और खास करके जो गांव थे वो भी जो गांव देहात के इलाके थे वो भी अच्छे से कनेक्ट हो गए. Now this discussion is timely given the challenges experienced by the Indian Railways due to the recent accidents and talk of the much needed upgrades to safety and other infrastructure. तो रेलवे एक के बाद एक रेलवे एक्सीडेंट्स को देखते हुए ये जो डेवलपमेंट अभी बात हो रही है यहाँ पर बुलेट ट्रेन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है. Now as far as considering the various challenges that Indian Railways is facing, this particular thing was also very important, because at this time our railways is actually facing challenges, and at this time if we can really work wonders with the bullet train, then there can be nothing really more special than this. Well guys, now it's time to take a look at the next question, which is going to be a close test, and here they come. So guys, here's your close test. I'm going to give you 1 minute to solve the close test and answer these two questions. Time starts now. Hurry up guys. 'Come on guys, last 45 seconds left. Hurry up guys, hurry up. Thirty seconds more. Fifteen seconds more. Last 5 seconds. Okay, so it's time for the moment of truth, and fan was. Now, what other words can be used? Thus, this passion project demonstrated. Passion project makes no sense, so option 5 to nahi ho sakta. This lovely project, seriously, this beautiful project. Again, we are not having fair and lovely contest over here, so I don't think option 1 and 2 really match up to the actual system. Then option 3 is ambitious. Okay, this ambitious project, this can be there, because usually when we do something new and when we do something really effective, then we do use ambitious with it. So ambitious can be there. This abhorred, hated project, no, it won't be abhorred. So most probably it's going to be ambitious only, and that's the answer anyway. For question number 5. Japanese Prime Minister Shinzo Abe will arrive in Gujarat later this week to blank space the foundation. Now, it's an infinitive over here. We are using an infinitive. That means we need 2 plus first form of verb, and there are only 2 words which are there. Okay, there are only 3 words. The first one is slay the foundation. Slay means to kill. Makes no sense. Option 5 can't be there. It's either 3 or 4. 4 means unearth, means to discover something. This week, to discover the foundation stone. You don't discover the foundation stone, so that's why it cannot be option number 4. It has to be option number 3, and that's the answer over here. उम्मीद करता हूँ सबका score 5 on 5 पहुँच गया होगा. If it's not 5 on 5, even 4 on 5 and round is also a nice score. Now, ladies and gentlemen, let's proceed for the next section, which is match the meaning. And here it is. So guys,
You have got some words from 6, 7, 8, 9 to 10 and you have to match them with their meanings. Your time starts now. 1 minute. Hurry up, people. $45 left, guys. Hurry up. Okay, last 30 seconds left. Quickly. Okay, 10 seconds more, guys, quickly. Okay, it's time to see the answers. Can we have the answers, please? Well, here are the answers, ladies and gentlemen, boys and girls. Debunk. The meaning of debunk is to disprove. जो debunk का मतलब होता है वो होता है गलत साबित कर देना, prove it wrong or disprove. You can type over here. मैं चाहूंगा कि आप लोग यहां पर टाइप करिए debunk equals to disprove. Come on, people, type this thing over here. Debunk equals to disprove. Okay. Now, क्वांटम का मतलब होता है अमाउंट. ओके गाइस, तो क्वांटम का मीनिंग क्या है? अमाउंट. कितना अमाउंट, मतलब पैसे वाला अमाउंट नहीं, यानी कि कितना एग्जैक्टली, हाउ मच. ओके, दैट्स द थिंग व्हाट क्वांटम शोज. सो गाइस, टाइप ओवर हियर क्वांटम इक्वल्स टू अमाउंट. क्वांटम इक्वल्स टू अमाउंट. ओके, अब जहां तक बात है मोनोटोन की. नाउ मोनोटोन मीन्स समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली रिगार्डिंग द सेम. एक ही जैसी चीज के लिए हम लोग मोनोटोन यूज करते हैं. सो समथिंग दैट डज नॉट चेंज एज रिमेन्स द सेम. फॉर दैट वी यूज मोनोटोन. सो वी कैन टाइप ओवर हियर, यू गाइस कैन टाइप ओवर हियर, मोनोटोन इक्वल्स टू कंटिन्यूअस. मोनोटोन इक्वल्स टू कंटिन्यूअस. ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रांसेंड. ट्रांसेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सरपास करना. ओके, इट मीन्स टू ओवरटेक और टू सरपास, और टू गो ओवर समथिंग. ऑलराइट, किसी चीज को पार कर देना या किसी से आगे आ जाना. सो ट्रांसेंड इक्वल्स टू सरपास. टाइप दिस थिंग ओवर हियर गाइस. ट्रांसेंड इक्वल्स टू सरपास. नाउ फ्रेंटिक. ओके, फ्रेंटिक का मतलब क्या होता है? फ्रेंटिक का मतलब होता है फ्यूरियस. बहुत ही मतलब धाकड़ टाइप से कोई चीज जब करना, या बहुत ही ज्यादा समथिंग दैट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ एनर्जी. ओके, सो एनर्जेटिक कह सकते हैं आप. सो फ्रेंटिक इक्वल्स टू फ्यूरियस. कम ऑन गाइस, टाइप ओवर हियर, फ्रेंटिक इक्वल्स टू फ्यूरियस. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वील हैव अ वेरी क्विक रिविजन. अभी आपने जो वर्ड्स देखे थे, डिबंक, क्वांटम, मोनोटोन, ट्रांसेंड, फ्रेंटिक, इनका साथ में आपने मीनिंग बोला. नाउ व्हाट आई एम गोना डू ओवर हियर इज, आई विल टेल यू द मीनिंग एंड यू विल टेल मी द वर्ड ऑफ विच दिस इज द मीनिंग. ठीक है भाई? तो अब क्या करेंगे, मैं आपको 2 बार मीनिंग बताऊंगा, आपको किस वर्ड की ये मीनिंग है ये यहां पर टाइप करना है. सो आई विल टेल यू द मीनिंग, you have to type the word of which that is the meaning. Okay guys, let's have a quick revision. Amount. Amount, A-M-O-U-N-T, amount. Amount किसका मीनिंग है यहां पर? Whose meaning is amount, people? Whose meaning is amount? Type the word. Yes. Okay, now whose meaning is surpass? Tell me people. Whose meaning is surpass? जो surpass है ये किसका meaning है बताओ? Whose meaning is surpass? Yes, exactly. Okay, now disprove. Whose meaning is disprove? किसका meaning है disprove? बताओ किसका meaning है disprove? Whose meaning is disprove? Yes. Okay. Now whose meaning is continuous? अभी जो हमने सीखा, what we just learned, whose meaning is continuous. Continuous किसका meaning है? किसका अर्थ है continuous? Yes. Okay. Now whose meaning is furious? Furious किसका meaning है? Whose meaning is furious? Yes, exactly. So I hope my dear friends that you enjoyed learning the vocabulary words. You enjoyed the 3 articles that we had today.
And you also enjoyed answering the questions of the comprehension, answering the closed test, and also the spotting error questions. So guys, let me tell you one thing, that this enjoyment I'll continue for sure, and keep watching Adda247, because with us, government job is right there in your pocket. Thank you and good evening.